Hi. So in this video, we are going to look into some of the tweets which are made by our fellow traders, and we are going to study. And I'm going to give my input about this particular scripts, this particular stocks which are being tweeted right now for the next week. That's for the third week of June. इस वीडियो में हम लोग थर्ड वीक ऑफ जून में कुछ कुछ ट्वीट्स जो आ रही हैं फॉर ट्रैकिंग सम स्टॉक्स एंड मेकिंग सम पोजीशंस, हम उसको स्टडी करेंगे और मैं अपनी व्यू पॉइंट दूंगा कि मैं इनको कैसे देख रहा हूँ और मैं इनमें कोई पोजीशन बनाना अगर चाहता हूँ तो व्हाट आर द लेवल्स आई वुड बी इंटरेस्टेड इन. सो दिस वाज अ ट्वीट जो जस्ट ओवर द वीकेंड ये ट्वीट हुआ था. सो दीज आर द 4 कंपनीज विच आर मैंशनड. एक है पावर ग्रिड, टाइटन, डीवीएस लैब एंड एसबीआई कार्ड. दीज आर 4 कंपनीज विच आर रियली गुड. मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है. पावर ग्रिड ऑल टाइम हाई में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था जो आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगी. टाइटन तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ट्रेड लिए थे एंड वी ऑल्सो ट्रेडेड द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. डीवीएस लैब अनफॉर्चुनेटली मैं कोई ट्रेड नहीं लिया. एंड SBI कार्ड ऑल्सो वी टुक द ब्रेकआउट ट्रेड, जो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको अपर राइट कॉर्नर में मिल जाएगी. सो बेसिकली इट्स आई डू एग्री कि डेफिनेटली ये बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, अभी नियर ऑल टाइम हाई है और इसमें पोजीशन बनानी है. सो गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ट एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द लेवल्स आई वुड बी इंटरेस्टेड जहाँ पे मैं एंटर कर सकूँ, राइट. एंड ये अभी ऑल टाइम हाइज़ के बहुत ही करीब है, कुछ कुछ ऑल टाइम हाइज़ में क्लोज हो रही है. सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एक्शन गोइंग फॉरवर्ड. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट कंपनी इज़ पावर ग्रिड. सो मैंने यहाँ पे पावर ग्रिड का चार्ट खोला है. अगर आप मंथली में देखते हो तो दिस इज़ दिस इज़ लाइक द बेस्ट चार्ट यू कैन ट्रेड. यहाँ पे आप देखते हो फ्रॉम स्टार्टिंग यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर वो टारगेट अचीव हुआ और फिर यहाँ पे फिर कप एंड हैंडल एक सॉर्ट ऑफ ऐसा एक पैटर्न डेवलप हुआ और अभी ये ब्रेकआउट दे रही है. द वॉल्यूम्स आर डिसेंट इफ़ यू कंपेयर टू द प्रीवियस सो मैनी ईयरली वॉल्यूम्स. अगर आप कंपेयर करो सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक. And going forward, power sector is also one of the sectors जो अभी which is in trend. Companies like Tata Power, Torrent Power, जिसमें हम लोग ट्रेड किए और पैसा बनाए in the last week, उसके ब्रेकआउट एनालिसिस भी आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर में मिल जाएगी. सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे ये बिहेव कर रही है. सो बेसिकली ऑन अ डेली चार्ट, वी आर ऑन अ डेली चार्ट राइट नाउ. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आफ्टर ये ऑल टाइम हाई बना रही है. सो सिंस लास्ट 3-4 सेशंस ये ओपन अप करती है और फिर ये सेल ऑफ हुआ. दिस वाज ऑन ट्यूसडे आई गेस, ऑन 8th. और फिर नेक्स्ट दिन ये गैप अप से ओपन की एंड दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो 242 ऑल टाइम हाई में क्लोज हुई. और फिर नेक्स्ट डे 248-249 रीजन में ओपन होके ये नीचे आ रही है. बट यू कैन सी दिस इज मेकिंग हाई लोज. So basically from a structural point of view I think this is pretty much in a very good position, or definitely it should be one of the companies which should be near tracker. But I think one of the things which I see from a trader perspective and what I see from an investor perspective is this particular level. Let me draw this level. This is a level between 238 and 240. एंड अगर हम लोग एक ब्रेकआउट एनालिसिस करते हैं, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड वन ऑफ द थिंग्स आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन, मे बी इट विल अगेन गैप अप टुमारो एंड देयर विल बी अ न्यू मूवमेंट. बट अभी अगर मैं इसके एनालिसिस करता हूँ सो आई थिंक दिस ब्रेकआउट इज़ वेरी गुड ब्रेकआउट and this should be in your radar. अगर कोई भी डिप आए because of Nifty or because of any other reason, this should be in your tracker and you should be making positions in power grid. ये जो movement, ये जो breakout आके ये जो pattern form कर रही है, this actually suggests that the script is very strong and even if a dip comes it will get bought, and this is a sort of a guarantee you can say. Again, these are speculations, always consult your financial advisor. आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही अपना इन्वेस्टमेंट्स करें. सो वन ऑफ द थिंग्स आई कैन से इज़ दिस पर्टिकुलर रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वुड बी वेरी मच बी इंटरेस्टेड इन वेरी शॉर्ट टर्म to make a position between 241 and 238 levels or 236 levels. तो मेरी गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी होगी अगर मैं इसका एक डिप के लिए वेट करूं. वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग जो डिप आ सकती है वो है अगर ये जो कैंडल बनी थी इसका जो लो है ये 240 था.
सो ऑन अ डेली चार्ट. सो ये बेसिकली 248 पे खुल के 240 में बंद हुई. नेक्स्ट डे इट अगेन गैप्ड अप विद एन ऑल टाइम हाई और अभी ऐसे आ रही है. आई थिंक इवन इफ इट 1 or 2 सेशंस या नेक्स्ट वीक अगर वो ऊपर भी जाती है टूवर्ड्स 250 levels, it will face some resistance and it is going to correct. Sorry. And I think this as जैसे मैं बोलता हूँ कि always try to study the pattern, and I think it will be something like this. यहाँ पे भी हाई लो हो रहा था. Then eventually it so अगर जो यहाँ पे 201 में घुसा है, so ये 205-6 तक गई, but then the correction was huge. So going forward I think I will wait, and मैं उसके either if it breaks 250, so basically I think 250 is a psychological level at least for this expiry which is going to come in next 10-12 days. और मैं going forward में मुझे लगता है कि ये 250 के ऊपर नहीं जाएगी. ऑफ कोर्स दीज आर स्पेकुलेशंस, लेकिन अगर मुझे पोजीशन बनानी है तो दिस 241 से 238 में मैं एक बहुत अच्छा सिप करूँगा. सिप इन द सेंस आई विल इन्वेस्ट एटलीस्ट 20% ऑफ द मनी विच आई वांट टू इन्वेस्ट इन पावर ग्रिड फॉर शॉर्ट टर्म. और फिर अगर वो 240 भी ब्रेक की तो द नेक्स्ट सिप लेवल वुड बी अराउंड अबाउट 234-ish, राइट. और मेरे हिसाब से ये कंपनी अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी दी गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप. सो मेरे लिए कोई स्टॉप लॉस नहीं होगी, और इसमें अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट होकर अटक भी जाता है आई वुड हैव नथिंग टू वरी अबाउट. अगर आप मंथली चार्ट देखते हो, दिस इज़ हाउ द मंथली चार्ट लुक्स लाइक. From 2016 onwards it had a good run till 2017-18, और फिर ये correction आई, and this says that the script was very weak, but now suddenly there's a lot of big green candles, and if you look into these green candles, it's very similar to these candles where there were also volume. अगर आप तब के वॉल्यूम से कंपेयर करो, सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इवन इफ द डिप कम्स एंड यू हैव टू होल्ड फॉर 4-5-6 months, दिस इज़ ऑन अ मंथली चार्ट यहाँ पे, बट स्टिल ऑन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू मेक मनी. और यहाँ पे अगर आप देखो ये 140 से 240-ish चली गई थी. सो दैट्स अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ मनी यू कैन मेक ओवर मंथ्स. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर निफ्टी को सचमुच अगर ऊपर जानी है एंड इट हैज़ टू मेक 20,000 एज द एनालिस्ट आर सेइंग, सो ये कंपनीज विल बी इन द फोरफ्रंट. Yesterday I posted a video stating about my indexes, so just a small case study that which I have my own set of companies, so definitely power grid is one of them. Going forward I will take positions and I will be carrying it for long term. So basically यहाँ पे जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं मोमेंटम ट्रेड के लिए भी देख रहा हूँ, so basically I won't buy just for your understanding कि ये जब ये रिवर्स करती है ना तब मैं बाई करता हूँ. जस्ट फॉर एग्जाम्पल इज ओवर हियर इट मेड एन ऑल टाइम हाई एंड देन इट डिप्ड, राइट. सो मेरा जो इवन इफ आई वांटेड टू एंटर से 237 238, आई वॉन्ट एंटर हियर बट रादर आई एंटर ओवर हियर. जो रिवर्सल करके इसको जितनी भी नीचे जानी है सो ये जा सकती है, आई डोंट केयर. लेकिन ये जो ऊपर आती है तब मैं इसमें एंटर करूँगा, ठीक है. सो उसी तरह ही अगर ये 240 पे आई वॉन्ट एंटर एट 240, रादर मैं चाहता हूँ कि ये डिप करके ऊपर आए, तब मैं 240 रीजन्स जब आएगी तब मैं एंटर करूँगा. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट डेमो अबाउट पावर ग्रिड. सो लेट्स हैव अ लुक इन व्हाट द नेक्स्ट इज टाइटन. डेफिनेटली टाइटन इज़ वन ऑफ द बिग कंपनीज, और गोइंग फॉरवर्ड टाइटन शुड be in one's portfolio. Now I'm not telling you to make a explicit position today or tomorrow, but going forward Titan should be one of the good things to be invested in, one of the good companies. Okay, last video में मैंने जब ये all time high हुआ था तो मैंने एक हिंट दिया था, और वो वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल में. आई विल ट्राई टू एड इट ऑल्सो इन द अपर राइट कॉर्नर. सो दिस इज आई सेड दिस इज़ अ वेरी टिपिकल पैटर्न वेन एवर इट मेक्स एन ऑल टाइम हाई, एंड आई लेफ्ट इट टू द व्यूअर्स टू एसर्टेन कि इसमें क्या होगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली यू सी, ये वीडियो जब मैंने पोस्ट किया था तब ये कैंडल बनी थी, लेकिन मैं तब यही बोला था कि यही पैटर्न बनती है, एंड थियोरेटिकली इट विल डिप टूवर्ड्स 1700 and then it will try to go up, right. But I think from a pattern perspective, I think we should be waiting for the dip, or 1680 regions or 1670 regions is a very good level where the reversal can come in, and if not then basically we should be here. You can see there was an all-time high break and it tried to, but then it dipped, and I think going forward if it dips, I think 1600 levels would be a very good area to make SIP.
every script can and will correct. So basically you just have to, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि लोग हमेशा बाई इन डिप्स बोलते हैं, बट व्हेन द डिप कम्स नो वन एक्चुअली इन्वेस्ट्स मनी, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट fears or psychological problem which you as a trader, you as a retail investor should overcome. और मुझे लगती है कि आप लोगों को इस पे अपना थोड़ा सा टाइम और मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये इट्स अ बिग मेंटल ब्लॉक, और मेंटल ब्लॉक्स को ओवरकम करना is just like coming out of any type of a fear you have. So you have to do a lot of you have to invest money, you have to hold. Maybe उस दिन जब ये गिरावट आएगी, you will see there are no buyers and basically it just keeps on falling. So if you are some sort of a trader and if you are looking for if you have very limited money and you want to have a quick trade, I would suggest कि don't then go for these, but rather these are from investment perspective. यहाँ पे हम लोग ये ट्रेड लिए थे 1700 का जो ब्रेकआउट आया था, और थियोटिकली अभी ये 1730 लेवल्स पे है, and anything can happen. It can move above 1750 and go towards high, that's always possible. लेकिन past patterns को देख के I am waiting for a dip, and I am pretty sure if the dip comes towards this 1713 1710 region, or even if it comes around about 1680, so basically this 1680 to 1710, this would be a reversal, and I would be very much be interested to enter it. But going by the past patterns, I think ये levels भी breach होंगी, maybe within the next 1 week or 2 week, or going forward. I think I want to be making positions over here, because I am looking for more of a 50% or 1640 levels से मैं अपना SIP start करूँगा if the 1680 goes broken. So let's look into the third company is DVS Lab. Unfortunately मैं DVS Lab में कोई position लिया नहीं in the short term, और DVS Lab ने एक बहुत अच्छा run दिया, but the reason for it is very evident that क्यों मैं नहीं लिया. अगर आप डेली चार्ट देखते हो, so this script has been ongoing, right? मतलब ये इस तरह का रन है. So if you look into, I always study the past patterns, so it's more of a run like this. I don't know whether the run will end over here. There are two trading strategies, investment strategies, momentum breaking strategies I have for DVS Lab. अगर ये 4400 क्लोज करती है के ऊपर जाती है, which would be the new all time high, तब मैं घुसूंगा for 4550 levels, और I think that would be a very good momentum trade. But theoretically I am waiting more for a consolidation and something like this, where I want the script to give me, and this is exactly what keeps on happening. See, past में अगर आप इसका study करो, so if you are looking, so this is a daily chart which we are looking at, so I want a phase like this, right? And I want it to be helping new positions being made. So I am still waiting, और ये अप्रैल के मंथ से जो रन स्टार्ट हुआ है उसमें वो फेज आया ही नहीं, and this is the reason I have not entered the script lately. So this is a very interesting script. Definitely अगर आप monthly chart देखो, so it's at all time high, and it's going fine, and I am just if I look for some past patterns, so basically मुझे एक dip चाहिए जिसमें मैं enter कर सकूँ, and I'm pretty sure there are a lot of people who are waiting for the dip. One of the very interesting levels would be this 4200 levels for me. So मेरा जो strategy है, मैं first sip करूँगा 42, अगर ये नीचे आई, अगर 440 के ऊपर गई, if it goes past 4400, I would enter for momentum trade, and I would be targeting 4550 levels. If not, if it dips and it comes over to this 4200 levels, I will again enter in SIP, and I will see if the reversal comes, or between 4150, 4140 and 4200 would be my first SIP level. So here you can see this is exactly what happens when it actually breaks this consolidation zone. It goes up and it breaks, it just falls, but it takes support in the second one. So अगर हम उस logic से देखें तो the first consolidation zone was this one, and the second one would be this one, which is round about at 3900 levels. But given the market sentiment and given the nature of the script and given the company
given everything is so positive, so I would be really skeptical कि अगर निफ्टी में कोई weakness ना आए, then it would actually be touching these 3900 level, क्योंकि last time when the breakout came, even then it didn't touch. So I think one of the SIPs would be between 4200 and 4100, and the next one would be 4000 levels. So this is all about DVS Lab, and let's see about SBI Card. And SBI Card is also one of the trades which I took very lately, and we were able, I was making positions in 1040 level over here. It's a daily chart, yeah. So yeah, exactly. And then it gave a breakout of 1111. We booked out on about 1100 levels. I have already tweeted. So one of the things going forward, if I look into the past, is basically this is something like it creates a high, and then it for 2-3 sessions is go down, and then it again tries to consolidate, and exactly this is what has happened over here. And then it goes, and then comes this series of reds, right? So I would be not surprised if tomorrow it goes above 1114 and 1140 levels, but I think from a return perspective, I see this is only 40, maybe it will face it has touched 1140 levels once and then twice. So going forward, if I look into a monthly chart, there's nothing actually. This is the problem, these are all new scripts. Okay, yeah. So going forward, I think as we have seen in these patterns, so it will always if it has to move, there should be a wick like this coming, which is quite a big buying happening. And if such a situation happens in this gap region, there is a gap over here which was created between 1055 and 1070 levels. So I would be very much interested to see how it behaves in this particular zone. And if a wick like this comes in, then during closing I will take position. Else what it can happen is it will have a series of series of red candles, and eventually it will correct. So I think even if a correction comes, 1040 level is a very strong level, and there has been a lot of buying interest in this particular zone. And if 1040 breaks, then I will look for below 1000, right? And I think, yep, that's it. So these are the 4 companies which I see. So I have mentioned the levels. मैं हर एक कंपनी का लेवल मेंशन किया. Going forward, I don't think कि एकदम मंडे 14th को एकदम मार्केट खुलते ही मैं पोजीशन लूँगा. Definitely I would be very much interested to see it going above 1144 levels और 1150 levels, जो ऑल टाइम हाई होगा. कल अगर एक गैप अप ओपनिंग हुई, then it would be very interesting to see how the script moves. And yeah, so I think ये 4 बहुत ही अच्छी powerful companies है, as tweeted by a fellow colleague. और all credit to the guys like this who actually give all this information for free in Twitter for their followers. And this is just a case study which I did of these 4 companies. So I hope this was helpful, and let me know if if you like such case studies. That would be awesome. Thanks a lot.